Today we have Zain with us. I'm going to tell you about Zain in detail, but before that, just a quick, agenda of today's conversation and also a little about AtomCamp. AtomCamp is a EdTech platform. We promote continuous and interdisciplinary education. We are giving a lot of trainings, boot camps, courses in data science, AI, data engineering. And we're trying to upskill workforce in Pakistan and provide as many data-driven individuals as possible and bring in more opportunities internationally, nationally for youth here in Pakistan. Today we have Zen with us. Zen works as a data engineer at bold.com. Very generous of Zen because he's not in the same time zone as us, but still he's here today to talk to us. Zen works on data-driven decisions and timely data solutions for various business needs and use cases. He's also worked for IBM, Retailio, ensuring data quality and reliability. He's also a NUST graduate और उन्होंने computer engineering भी पढ़ी हुई है from NUST. He's worked both nationally, right now is working internationally. I'd also let Zen tell us more about him in case I've missed any cool things that he does. And also what inspired him to start a career in data engineering. And also जब से आपने start किया और अब AI के आने के बाद how easy it is or harder it is to navigate as a data engineer. So over to you, Zen. Please. Thank you, Ikra. Thank you for the very generous introduction. And thank you for having me. Coming to your question, I think I started my career off not as a data engineer actually. So when I graduated, I got into the first job offer that I got. So it was from a telco that I got an offer for a graduate trainee engineer kind of a thing. Usme I wasn't really working in a data engineering space, but more of in a project management and quality assurance kind of stuff. That was the actual moment where I got exposure around how different functions work within different organizations, how data warehousing comes into play, how data engineering comes into play and stuff. And so that's basically how I got the exposure to what data engineering is, honestly. During my academia days or during my degree, I had no clue what data engineering is. But eventually, I think time ke saath saath, when you get some exposure, when you start basically just dive into it and then see how different functions are working. So wahan se basically I got to know about what data engineering is. पहली जॉब पे आई ट्राइड टू बेसिकली ट्रांजिशन टू द डेटा वेयर हाउस डिपार्टमेंट जो हमारी कंपनी का था. आई डिड नॉट एग्जैक्टली गेट इनटू देयर बट व्हाट आई ट्राइड वाज कि मैं उसमें से ही बेसिकली जस्ट ग्रैब सम सब प्रोजेक्ट्स और छोटे छोटे टास्क पकड़ के wherever I can get exposure around databases or data warehouses वो शुरू कर दूँ. Apart from that, learning is very important, I feel. Graduates mostly जितने भी होते हैं, talking about myself, I wouldn't say कि मैं बहुत ही skilled graduate था. Yes, I was a nerd, but I wasn't a very skilled graduate when it comes to actual hands-on skills. तो उसमें जो I had to upskill. Start obviously जब आप data engineering start करते हैं, the first thing that comes to your mind is कि data warehouse क्या होता है, SQL क्या होती है, databases क्या होती हैं and stuff like that. So I'll come to that part later. Okay, what's the exact chronological order? Like, and that's basically how it started. I worked in Pakistan, and basically I was based in Pakistan, but I was working with companies based in UAE and other MENAP region. I started off at, like I said, a telco. फिर उसके बाद I moved to IBM, where I was working with a couple of clients around very diverse kind of skill sets. Fun fact, I've done QA testing on mobile app devices for 5-6 months as well. So वो आपको you have to wear different hats जब आप काम कर रहे होते हैं with a services company or different projects आ जाते हैं and stuff like that. After that, I moved to Retailer, where I worked as a data engineer, and that's actually where I met Umar. And वहाँ पे basically then I worked for a year and a half, or yeah, and then I moved to the Netherlands. Now I'm working at bold.com. Bold.com
it's pretty much the same business model as Amazon, but in Netherlands and Belgium. So they term the Netherlands and the Belgium region as the Benelux region. So yeah. That's very interesting, Zen, and thank you so much for being so candid about your journey कि आपने start कैसे किया था, but then again आपने education की भी बात की कि you were a nerd but obviously had to upskill yourself as well as you entered into the data field. जब सॉरी किसी ने कहा था उर्दू में बात करें तो मैं भी कोशिश करूंगी I'd also request you कि हम थोड़ा उर्दू में बात कर लें. अगर उसके अंदर हम बात करें कि जॉब मार्केट के अंदर आप आए और फिर आपने सोचा कि स्किल्स की जरूरत है, आपने नस से पढ़ा हुआ है तो एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा हमारा इसमें लैक करता है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि आपको क्या डिफरेंस फील होता है. ऑल्सो जैन, मेरा ये क्वेश्चन एक फॉलो अप क्वेश्चन इससे ये भी है कि आपको क्या लगता है कि जब आपने स्टार्ट किया था उसके बाद से नाउ दैट देयर इज अब टेक में इवॉल्वमेंट है, आ गई है बहुत, एआई आ गया है, जनरेटिव एआई आने के बाद, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जॉब आसान हुई है या मुश्किल हुई है? अब आप एज अ डेटा इंजीनियर एआई को क्या यूटिलाइज करते हैं और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? That's a good question. AI को I think आजकल most of the software engineers are using it at some point in time. I think with chat GPT के आने से आप जिंदगी बहुत आसान हो गई honestly. जो आपको बहुत छोटे छोटे ट्रिवियल इश्यूज होते थे जिस पे आपको आवर्स इन्वेस्ट करने पड़ते थे टू डीबग कैसी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, वेयर इज इट जनरेटिंग फ्रॉम, वो आई थिंक चैट जीपीटी स्पेशली से काफ़ी आसान हो गए हैं एंड ऑब्वियसली अदर generative AI platforms as well. I don't use those a lot, but ChatGPT को obviously I use time to time जब मुझे कोई when I'm stuck somewhere and I don't want to spend बहुत ज़्यादा time on Stack Overflow or internet trying to find a solution. Uh, yeah, I think उससे जो है काफ़ी आसान हो गया है. Another thing that I feel is कि अगर चैट जीपीटी या इस तरह के जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स तब होते व्हेन आई ग्रेजुएटेड, और हो सकता है जो लर्निंग कर्व था वो नॉट हैव बीन दैट लॉन्ग. चीज़ें सीखना इज मच इजियर नाउ. आपको जाके यू डोंट हैव टू रीड ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन कि सब कुछ पढ़ें, देखें क्या चीज़ हाउ व्हाट वट एवर हाउ व्हाट थिंग वर्क्स. आप उसको बेसिकली यू कैन जस्ट so there's एक thumb rule है chat gpt का, I was reading up on it. So basically if you want to learn any technology in like बहुत से छोटे से मैनर में, तो आप you just name the technology and you just ask chat gpt के what does it do, how does it do it, and just summarize it for me. So I think कि knowledge absorb करना काफ़ी आसान हो गया है. Tailoring your resumes, tailoring your bios and stuff like that, वो काफ़ी आसान हो गया है. Obviously उसमें plagiarism आ जाता है at some point in time. You can't really सारा कुछ आप ऑटो जनरेट नहीं करा सकते, लेकिन ऑब्वियसली आपको आई थिंक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको वो लीड्स मिलना शुरू हो जाते हैं जिस पे यूजुअली अगर ना होता है तो आप you would spend hours looking up on stuff, which obviously most of the software engineers did who started like before ChatGPT came in, including myself. So Thank you so much for explaining it very nicely, Zen. Also, जो आपने जिस तरह चैट जीपीटी की भी बात की है, हम जब भी एआई की बात करते हैं तो नॉट जस्ट चैट जीपीटी और भी एलएलएम मॉडल जो हैं या अगर एमएल पे भी काम कर रहे हैं, आपको इसको एज अ टूल यूज करना चाहिए टू मेक योर लाइफ आसान. अपनी जिंदगी आसान करने के लिए आप उसको जितना यूज कर सकते हैं आप करें. और जिस तरह आपने कहा कि अगर उस वक्त होता तो शायद लर्निंग कर्व भी आसान होती, अप्लाई करना क्योंकि बहुत ज्यादा जगहों पे अप्लाई करना होता है. तो building on to that, आप what does a day look like for you? Because obviously bold.com एक काफी एक बड़ा जगह है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं. Then you also went from Pakistan. आपका यहाँ का भी exposure था. तो what does a day look like for you as a data engineer? आपका आपके day to day tasks क्या होते हैं और what do you do? Just to give our audience an idea कि as a data engineer आप क्या करते हैं? yeah, days जो है वो वेरी करते हैं ऑनेस्टली. सो हमारा बेसिकली वी हैव हाइब्रिड मॉडल. सो हम लोग वी आर इन दी ऑफिस ऑन मंडे एंड वेंसडे, ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे हम लोग घर से काम कर रहे होते हैं यूजुअली. अगर कोई वॉलंटियरली जाना चाहता है ऑफिस तो nobody really stops you. On office days काफ़ी टाइम कम्यूट पे जाता है बिकॉज at Bold, I work at Bold.com. So Bold.com Utrecht में, I'm not sure, most of the people won't know. So ये basically Netherlands का एक शहर है and मैं जो रहता हूँ वो is in a different city. So the commute is travel time is around 50 minutes 1 hour. So
जो ऑफिस डेज होते हैं दोज आर क्वाइट हेक्टिक। उसमें जो है आई रीच अप टू ऑफिस रीच इन द ऑफिस अराउंड 9:30 9:45 और समथिंग। उसमें जनरली स्टार्ट में यही होता है कि जब आप ऑफिस में आते हैं तो आ, सबसे पहले व्हेन यू आप जीरा बोर्ड खोलते हैं एंड सी व्हाट स्पेंडिंग, स्पेशली अगर आप इफ यू आर वर्किंग इन स्प्रिंट्स तो, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग अप, अगर आप कोई टास्क स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने स्प्रिंट अभी नहीं स्टार्ट किया हुआ तो देन बेसिकली जस्ट गो थ्रू द बैकलॉग और द टास्क एंड सी what you can pick up. Most of the organizations here in the Netherlands have a very open work culture. तो यहाँ पे नो वन जनरली पुशेज यू कि आपने यही टास्क करना है और इसको इसकी ड्यूरेशन में करना है। इट्स बैकलॉग होता है, जिसका जो दिल के जाता है वो उसमें से ही कैन पिक इट अप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। उसमें यूजुअली कोई टास्क मैंने नहीं पिकअप किया हुआ तो आई go through the backlog and see what interests me and what I want to pick up. Start working on it. Obviously, उसमें जब आप ऑफिस होते हैं तो you chat with colleagues as well, catch up with other folks. Then we usually have we have lots of meetings as well. That is the part I don't really like a lot, क्योंकि आप अगर if you're spending 3-4 hours a day in the meetings तो आपके पास actual काम करने का टाइम बहुत कम रह जाता है। सो ऑफिस डेज में हमारी यूजुअली मीटिंग ज़्यादा होती हैं बिकॉज हम प्रेफर करते हैं कि जो टेक्निकल डिस्कशंस हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग्स हैं वी हैव दोज इन द ऑफिस। सो वी हैव अ स्टैंड अप, देन वी हैव अगर कोई मीटिंग हो तो फाइन, अदरवाइज वी look into the tickets that we've been signed. उसमें भी there is a proportion. So 40 to 50% होता है वो जर्नल मेंटेनेंस वर्क, ऑपरेशनल वर्क। कोई इशू आ गया है, किसी की रन टाइम पे रिक्वेस्ट आ गई है जो हमने देखनी है, या कोई प्रोडक्शन में इशू आ गया है। एंड 30-40% इज जो हम बेसिकली इनोवेशन पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें डेवलपिंग फीचर्स फ्रॉम स्क्रैच, इम्प्रूविंग स्टफ। सो वो उसमें ये जर्नल स्प्लिट होता है। उसके बाद या यूजुअली देन वी हेड ऑफ फॉर लंच एंड स्टफ, एंड सेकंड हाफ यूजुअली जो है थोड़ा सा इज मच क्वाइटर इन टर्म्स ऑफ मीटिंग्स अनलेस वी डोंट हैव रेट्रोज और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो जर्नली ये होता है। अदरवाइज अगर कोई स्पेशली अगर कोई देयर इज एन इंसिडेंट या कोई प्रोडक्शन में मसला आ गया तो देन फिर वी हैव टू बेसिकली अबाउट एवरीथिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज हम बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो दैट इज काइंड ऑफ टाइम क्रिटिकल। सो एट bold.com द टीम दैट आई वर्क इन, हम बेसिकली जो यूजर्स हैं, सो वी हैव वेब ऐप एंड वी हैव मोबाइल ऐप्स। डिफरेंट यूजर्स आते हैं, डिफरेंट एक्शंस करते हैं, डिफरेंट इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई इवेंट क्लिक किया है, कुछ व्यू किया है, कोई ऑर्डर प्लेस किया है। सो हम बेसिकली हमारा जो टीम है वो हमारी जो टीम है वो सारे उन इवेंट्स को एग्रीगेट करके आगे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है। एंड जस्ट टू गिव यू गाइज एन आइडिया, वी आर प्रोसेसिंग अबाउट 120K इवेंट्स पर सेकेंड। सो वो उसका दैट इज द थ्रूपुट ऑफ द इवेंट्स कमिंग इन। सो उसमें अगर कोई प्रोडक्शन में मसला आ जाए तो देन आप ऑब्वियसली आपके पास वो टाइम टाइम नहीं होता कि आप उसको अफोर्ड कर सकें बेसिकली। सो then obviously we jump ships and start looking into it. Otherwise it's usually meetings for the 60% of the time, and then 40% is actual work. Thank you so much, Zain, for giving us a very clear picture. Honestly, the idea of having such conversations यही है कि हम एक youth को direct interaction का opportunity दे सके, where they learn from people like yourself जो already काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि क्या चीज़ होती है। वरना तो AI क्या है, data engineering क्या है, तो हम Google भी कर सकते हैं, लेकिन Yep. Google हमें obviously ये नहीं बताएगा कि Zain का और किसी data engineering का day to day work किस तरह का होता है और क्या लगता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट दैट जैन। ऑल्सो आप ये हम आपसे ये भी पूछेंगे कि आप एग्जैक्टली क्या क्या टेक्निकल स्किल्स आपने सीखी थी, क्या ज़रूरी होती हैं, जस्ट टू गिव अवर ऑडियंस एन आइडिया। बट बिफोर दैट, दिस साउंड्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग डे, बट ऑब्वियसली इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। आपने पहले पाकिस्तान में काम किया, फिर ऑब्वियसली आप यहाँ पर आए। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ये गाइड करें कि इंटरनेशनल जॉब सिक्योर करने का क्या प्रोसेस होता है। आपने कितनी मैस ईमेल्स भेजी थी या कितनी जगहों पे अप्लाई किया था, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस यू हैड ऑन योर रेज्यूमे, जिसके बाद आपको उधर आप इधर अभी जिस जगह पे काम कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा उसके बारे में बात। Yeah, that's a very interesting question. जो अक्सर लोग मेरे से ये सवाल पूछ रहे होते हैं, एंड स्पेशली इफ आई एम बीइंग एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, मैंने अपने से बेहतर टेक्निकली लोगों को देखा है कि वो गेट रिजेक्टेड। और एट टाइम्स मैंने मतलब when I moved to the Netherlands, मेरा experience was somewhere around 3.5 years.
And obviously there were people much more experienced than me जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे and were getting rejections. Obviously everyone gets rejection, that's a part and parcel of the process. But coming back to that, I feel a that I'm blessed in that regard, and two, I feel that even if we don't like it, there's somewhat an aspect of luck involved in that. Uh, but coming back, obviously, टेक स्टैक डिपेंड करता है. सो फॉर एग्जांपल कोई भी अगर इफ जॉब हंट कर रहा है स्पेशली अब्रॉड, फर्स्ट एरियाज दैट कम इनटू वंस माइंड के यूएई है, मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, और यूएस या ऑस्ट्रेलिया है. नंबर वन थिंग आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जॉब मार्केट्स में इशू क्या है, व्हाई आर दे हायरिंग पीपल फ्रॉम अब्रॉड, एंड व्हाट इज द शॉर्टेज और द गैप जो व्हाट दे आर ट्राइंग टू फिल. मैं personally, I was more inclined towards Middle East and Europe. My first priority was obviously Europe, and second was Middle East. Middle East second priority इसलिए थी because I did not like the work culture that's basically prevalent in the Middle East, especially UAE में, क्योंकि पाकिस्तान का work culture similar है काफ़ी. Everyone expects you to work like a workaholic, 8-8 10-10 घंटे काम करें, and that is not personally something that I endorse. Obviously होता है अक्सर कि मैं यहाँ भी बैठ के अक्सर 8-8 10-10 घंटे कर रहा होता हूँ, लेकिन वो दैट इज एट माई ओन विल. मतलब अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ एंड इफ आई एम स्टक या फंस गया हूँ, तो आई वुड रादर स्पेंड 2 hours एक्स्ट्रा रादर देन जस्ट शटिंग डाउन माई मशीन एंड जस्ट सीइंग व्हाट हैपेंस नेक्स्ट डे. टेक स्किल्स की अगर हम बात करें तो उसमें यूरोप की मार्केट स्पेशली जिस चीज़ में काफ़ी शॉर्टेज है, दैट इज़ क्लाउड रिसोर्सेज, पीपल विद एक्सपर्टीज इन पब्लिक क्लाउड्स. उसमें ए डब्ल्यू एस है, एज्योर है, और गूगल क्लाउड है. यूरोप में ज़्यादातर एज्योर और गूगल क्लाउड को प्रेफर करते हैं ओवर ए डब्ल्यू एस फॉर सम रीज़न. मुझे अभी तक नहीं समझ आया, बट मेनली आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यूएस में ज़्यादा ए डब्ल्यू एस पे फोकस है, एंड यूरोप में इज़ मोर अराउंड एज्योर एंड गूगल क्लाउड. सेकंड जिस चीज़ को, सो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट फील्ड्स, डेटा इंजीनियरिंग के भी होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट डेटा इंजीनियर्स, यहाँ पे अगर आप इफ़ यू हैव स्किल्स, फॉर एग्जांपल एक एंटरप्राइज टूल में जिस पे ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं काम कर रहे हैं, ज़्यादा कंपनीज नहीं यूज़ करी, फॉर एग्जांपल टेरा डेटा का हो गया, आई थिंक इंफॉर्मेटिका हो गया, आईबीएम का हो गया. सो उसमें जो है ऑब्वियसली अगर आपकी एक्सपर्टीज उसमें है, आपके लिए जॉब फाइंड करना वुड बी, चांसेस वुड बी मच लेसर एज कम्पेयर टू समवन जिसने ओपन सोर्स चीज़ों पे काम किया हुआ है. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने एक ओपन सोर्स चीज़ों पे आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हो, और दूसरा आपका पब्लिक क्लाउड्स में एक्सपोजर हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ डेटा इंजीनियरिंग रोल. अगर आप डेटा एनालिस्ट की तरफ इंटरेस्टेड हैं, तो देन दैट्स अ होल डिफरेंट इक्वेशन. If I talk about public frameworks, so for example, when I was working in Pakistan, I think retailer mein, so that's when I actually started working on some of the open source frameworks. So उसमें हमने कहा कि we need to set up streaming frameworks जो real time में events process करे. उसमें there's Apache Flink, there's Apache Kafka. Scheduling के लिए we have Airflow, we have Argo and stuff like that. So उसमें basically that is how I initially started with streaming frameworks. So उसमें जो I started liking that, और उसमें used to spend a lot of time, invest a lot of time in that, और see के how streaming frameworks work, because the whole idea कि आप real time में events को ingest भी कर रहे हैं, process भी कर रहे हैं, and then you're basically dumping them as well. And that is happening within a few milliseconds or a few seconds. So that idea really fascinated me, और वहाँ से basically मैंने start किया है इस पे streaming frameworks पे काम करना, different चीज़ों को explore करना. जो चीज़ें जिन चीज़ों पे मुझे for example 3 या 4 weeks लगे थे just to figure out stuff, उस पे I wrote some blogs as well कि अगर for example कोई बंदा scratch से बिल्कुल start कर रहा है, तो how he can basically ramp up without having to spend उतना ही time. So yeah, that's how I eventually started. Obviously, साथ में उसमें, so there's streaming and there's batch as well. So batch में भी obviously there were things that I was working on in batch frameworks as well.
लेकिन आई वुड से मेरा प्राइमरी फोकस स्टार्ट से स्ट्रीमिंग फ्रेमवर्क्स पर है, एंड करंटली इन माय रोल एज वेल, लाइक आई मेंशनड, वी आर वर्किंग मेनली विद स्ट्रीमिंग फ्रेमवर्क्स जो रियल टाइम में इवेंट्स प्रोसेस कर रहे हैं. या आई होप दैट आंसर्स दैट. Yeah, but just I would also really like you to talk about the hiring process और आपने apply जब किया for this for the role internationally तो आपके क्या hurdles आए आपने क्या process follow किया just for the audience to get an idea अगर वो भी apply करना चाहते तो कैसे करें. Yeah, sure. I forgot about that question. Uh, Usme, I think there's a couple of steps to that. Just to give the audience an idea. Before I got my first offer, मैंने तकरीबन 12 months, maybe or 13 months daily apply किया है at least 10 to 15 jobs में. And obviously, you can imagine कि what the number of rejections would be. But I think to start off, you need to be aware of the fact कि general जो at least Europe में trend है, that is कि they prefer candidates with at least 3 years of experience अगर वो relocate कर रहे हैं. Obviously उसमें exceptions होती हैं, कम experience वाले लोग भी hire होते हैं and stuff, but generally जो है that is the trend. First thing I think you need to evaluate yourself basically and see के जो मेरे टेक स्किल्स हैं या जो मेरा स्किल सेट है, डज दैट मैच जो जॉब ऑफर या जो सॉरी जॉब एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं लिंक्डइन पे. आप उस पर फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि यूरोप के एरिया में कौन कौन सी जॉब्स हैं, डेटा इंजीनियर्स जो हायर कर रहे हैं उनके क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं. एंड देन बेसिकली जस्ट बी ऑनेस्ट एंड आस्क योरसेल्फ के even even do I even feel like 30-40% of what most of the companies are asking. अगर इफ द आंसर इज नो देन आई थिंक कि कोई उसमें बुरी बात नहीं है कि आप अपने ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, स्टार्ट अप स्किलिंग उन चीज़ों को सीखें. कोई भी चीज़, वन थिंग दैट आई लर्नड इज कि किसी भी अपने टूल पे काम करना हो, किसी भी फ्रेमवर्क पे काम करना हो, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. वन थिंग दैट आई फील इज कि जो आपको चाहिए होती है इज परसिस्टेंस. कोई चीज़ अगर आप स्टार्ट करें, यू नीड टू कीप गोइंग एट इट. इवेंचुअली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती विच यू कांट रियली क्रैक इन द tech space, honestly. We have ran, so talking from my experience, we have ran into very strange, weird problems over the course of 3 4 5 years. और उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती थी जिसमें हमें गूगल या कोई क्लाउड प्रोवाइडर भी कह रहा होता था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर रनिंग इनटू दिस एंड वी आर नॉट रियली श्योर कि ये क्यों आ रही है या कैसे आ रही है. बट ऑब्वियसली आई थिंक दैट इज हाउ यू इवेंचुअली लर्न, बट यू नीड टू कीप गोइंग एट इट. once you're doing that, I think upskilling पे भी बात कर ही रहे हैं, तो I need to emphasize the fact कि you need to be good at reading docs. I know कि काफ़ी बोरिंग होता है जब आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल डॉक्स जाके पढ़ने पड़ते हैं, बट आई थिंक द अमाउंट ऑफ नॉलेज जो आपको वहाँ से मिलता है वो आपको कहीं से नहीं मिल सकता, बी इट स्टैक ओवरफ्लो, बी इट चैट जीपीटी, बी इट एनी ब्लॉग और मीडियम. सो डॉक्स आर देयर फॉर अ पर्पस. वो इसी वजह से लिखे जाते हैं कि दे आर थॉरो, दे कवर एवरी सिनेरियो. एंड बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ पर डेवलपमेंट स्टार्ट करें या किसी प्रॉब्लम यू रनिंग इनटू अ प्रॉब्लम, दैट इज बेसिकली वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्स कम्स इन. काफ़ी उसमें मैंने देखा है आजकल के स्पेशली प्रोफेशनल्स में एंड सम ऑफ द पीपल दैट आई वर्क विद के लोग हेजिटेंट होते हैं थोड़ा डॉक्स खोलने में कि इसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन एंड स्टफ लाइक दैट. बट आई थिंक दैट्स ह्यूजली बेनिफिशियल कि अगर आप वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक दैट गोज वेस्टेड इन एनी वे. सेकेंड आई वुड सजेस्ट कि वर्क ऑन योर पर्सनल पोर्टफोलियोज. कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसकी फर्स्टली आप गिट सीखें. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ गिट और एनी फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल आप गिट लैब, गिट हब, वट एवर सूट्स यू. और उसमें जो है मेक श्योर यू हैव अ पोर्टफोलियो, एन ऑनलाइन प्रेजेंस. आप उसमें अगर कोई टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, make sure you add those changes to your add that project or that repository to your GitHub profile. और उसको बाद में आप you can link it to your CV. हायरिंग प्रोसेस में मे बी इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि अगर आपकी गिट की प्रोफाइल है या नहीं है, बट जनरली जो है आपकी जो विजिबिलिटी है विद इन दी टेक कम्युनिटी एंड दी रिक्रूटर्स, वो थोड़ी जो है इट गेट्स बेटर एंड द चांसेस बेसिकली गेट बेटर. The other thing is persistence. Honestly, अगर आप if you're trying to relocate from Pakistan to anywhere abroad, to be honest,
and you have the skill sets. If you feel you have the skill sets, you're आप ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं विच इज़ ग्लोबली इन डिमांड, कोई बेसिकली लेगेसी फ्रेमवर्क्स नहीं है या 10 साल पुरानी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, then it all comes down to persistence. You need to keep going at it. Like I said, I before I got the job, yeah, my first job offer, मैं कोई पिछले उससे साल पहले तक I used to apply daily at least 6 to 7 jobs पे, and it's very simple. आपने LinkedIn पे जाना है, you just need to add the filter और अपना आपने add the job that role that you're applying for example data engineering or data analyst, एंड उसमें बेसिकली जस्ट गो थ्रू द जॉब्स एंड सी कि कौन सी जो है आपकी मैचेस योर पोर्टफोलियो, एंड देन जस्ट कीप अप्लाइंग एट इट. रिजेक्शंस आएंगे, ऑब्वियसली रिजेक्शंस रोज के हिसाब से एटलीस्ट आपको 10-12 रिजेक्शन ईमेल्स आएंगी, एंड यू नीड टू गेट यूज टू इट. इट्स अ रियलिटी. लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू कीप गोइंग एट इट, आपको यू विल इवेंचुअली गेट इंटरव्यूज, एंड जब आपको इंटरव्यू मिलना शुरू हो जाए तो देन यू आर पास द स्क्रीनिंग स्टेज. Then it's eventually down to your skill set and your technical level. And I think if you're there, तो उसमें obviously उसमें फिर then there's not a problem. One last thing that I would like to highlight is कि पाकिस्तान में तो इस चीज़ को इतना फोकस नहीं किया जाता, but especially abroad, I can talk about Europe, not sure about the States or Australia or the Middle East. यहाँ पे जो है at least they're very critical of uh, the work culture. So they make sure the work culture is friendly. It encourages people to open up, encourages people to discuss what their grievances are, what their problems are, whatever they feel. uh, उसके लिए अक्सर ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा टेक्निकल राउंड क्लियर कर लेता है, देन देयर कम्स अ पार्ट जहाँ पे बेसिकली कल्चरल फिट इंटरव्यू होता है. एंड उसमें जो है यूजुअली पाकिस्तान में तो इट्स अ फॉर्मेलिटी कि टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो कल्चरल फिट में यूजुअली इट्स यू मीटिंग विद मैनेजर और स्टफ. बट here or if you're applying abroad and you make it to the cultural fit interview, make sure you're honest, make sure you're not making up stuff, because यहाँ पे लोग जो हैं they're very critical of the people that they're hiring. और उसमें it's always nice कि अगर depends on the interview to interview, but if someone makes it to the cultural fit interview, it's always nice to talk in a kind of a very friendly manner. उसमें आप बीच में अगर कोई jokes crack कर सकते हैं, very subtle kind of, just to keep the conversation human and not kind of robotic. So I think that helps a lot as well. Yeah, that would be it. I think I can go on about it for ages, but I think या आई थिंक आपने काफी अच्छी तरह समराइज कर दिया, और ज्यादातर यही क्वेश्चंस होते हैं, और आप ज्यादातर इसी बारे में थोड़े एंशियस होते हैं कि हम किस तरह इंटरव्यू, क्या अगर हम इतनी ज्यादा रिजेक्शन आ रही हैं तो कभी हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी. एंड देन यू टॉक्ड अबाउट परसिस्टेंस और कॉन्टिन्यूसली अप्लाइंग एंड ऑल्सो लर्निंग स्किल्स. इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा अगर आप और बताएं कि आपने कोई लाइक पर्सनली जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, आपको लगा कि जब आप ये अगर ज्यादा बेहतर हो जाता, उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, एंड देन विल कम टू द स्किल्स लाइक क्विकली 4 5 अगर आप थोड़ी सी ऑडियंस को बताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सीख. yeah, interviews में I think it depends from again organization to organization. Especially so मैंने जो है at least I can recall 5-6 interviews जिसमें से eventually 5 or 4 were rejections, एक में जो है they accepted and then they rejected. But उसमें one thing I can think of is कि एक there are two types of interviews. एक होते हैं generally जिसमें एक tech interview and you're just having a one-on-one conversation with a software engineer or a engineering manager. और उसमें जो है it's mostly talking about technical stuff, architecture design, scalability and stuff like that. जब आपकी सो दूसरी टाइप ऑफ इंटरव्यूज होते हैं जिसमें आपकी एक्चुअल टेक असेसमेंट्स होती हैं, जिसमें इधर आप लाइव स्क्रीन शेयर करके कोडिंग कर रहे हैं या आपको उन्होंने कोई असाइनमेंट दी हुई है और उसको आप बेसिकली सबमिट कर रहे हैं. टेक इंटरव्यूज जिसमें बेसिकली यू आर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन, उसमें आई थिंक इट्स नाइस टू बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट. अगर आपने किसी फ्रेमवर्क पे काम किया हुआ, आई थिंक यू नीड टू बी कैंडिड अबाउट इट. अगर आपने किसी फ्रेमवर्क पे नहीं काम किया हुआ तो आई थिंक इवन इन दैट केस
और उसमें एक थिंग इज वन थिंग इज इम्पोर्टेंट इज कि आपने एक टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है, एंड द अदर थिंग इज आपने उस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन में यूज़ किया हुआ है। आई थिंक दोज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। जब आपने किसी टेक्नोलॉजी पे काम किया है, मैं अभी बैठ के फॉर एग्जांपल गोलैंग का ट्यूटोरियल खोल के आई कैन क्रिएट अ स्मॉल ऐप, और उस पे आई कैन से कि मुझे गोलैंग आती है। But if I'm having an interview with a software engineer जो basically hire Golang के लिए कर रहे हैं, और they I tell them कि I worked in Golang and stuff, then I think I need to be clear कि मैंने Golang पे I mean I've explored it, but मैंने उस पे production में या इस तरह intensive workloads के अंदर काम नहीं किया हुआ. So I think it's really nice to be honest and candid about what you know. Second is जब अगर 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 आपको for example tech interviews या टेक असेसमेंट्स या टेक होम असाइनमेंट्स वगैरह पे इफ यू मेक इट टू दैट स्टेज, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि फॉर एटलीस्ट फॉर लाइव स्क्रीन शेयरिंग स्टफ या जो कोडिंग असाइनमेंट्स होती हैं उसके लिए आई थिंक यू नीड टू start practicing some stuff on lead code if you're not good at programming. अगर प्रोग्रामिंग आपकी डे टू डे वर्क में या जॉब में इज नॉट इंक्लूडेड, आई थिंक इट्स नाइस टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग लीड कोड और हैकर रैंक जस्ट टू बेसिकली improve your problem solving skills. उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स उन्होंने हैकर रैंक पे दी हुई हैं उसमें काफ़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी भी मुझे अगर कोई उसमें से 4-5 ऐसी होंगी प्रॉब्लम्स जो इवन फॉर द इंटरमीडिएट लेवल जो would take me ages to crack. So उसमें you need to realize कि आप सारी problems नहीं कर सकते, but what it does is कि वो आपका thought process उसमें चलना शुरू हो जाता है and you get familiarized in that space. Uh, that is one thing. जो take home assignment होती है उसमें I'd suggest कि इवन अगर आपने किसी फ्रेमवर्क पे काम नहीं भी किया हुआ, आई थिंक हमारे साथ भी ऐसे कलीग्स काम कर रहे होते हैं जो फॉर एग्जांपल जावा या कोटलिन इंजीनियर्स हैं, लेकिन उन्होंने जावा पे इससे पहले काम नहीं किया हुआ था. So I think what most of the employers look for is engineers and not just people who know some technology. So I think उसमें if you're doing a take home assignment और उसमें कोई ऐसा framework भी आ जाता है जिस पे आपने काम नहीं किया हुआ, I think it's really nice अगर आप if you can spend the time or invest some time and look into it, और उसको जो है पूरा नहीं भी होता, it doesn't really matter. I think no one really expects कि आपको कोई भी take home assignment मिलेगी तो आप उसको end to end complete करेंगे. Most of the companies या most of the teams what they look for is people with good critical thinking and engineers जिनको पता हो कि problem कैसे solve करनी है या कैसे approach करना है. So that is what most of the companies are looking for, including Bol. So whenever we hire, हम सबको एक Flink का basically Flink application दे देते हैं जो उन्होंने लिखनी होती है, and most of the data engineers उन्होंने नहीं काम किया होता Flink पे, और अक्सर we get to hear that in the interviews as well कि this is the first time मैं Flink पे काम कर रहा हूँ या for example Java पे काम कर रहा हूँ, but I gave it a go and this is what I came up with. एंड उसमें हमने एक्चुअली वी हैव हायर्ड पीपल जिन्होंने पहली दफ़ा फ्लिंग पे असाइनमेंट की थी, जावा पे असाइनमेंट की थी, बट what matters is eventually how their engineering brains work and how are they approaching the problem. थैंक यू सो मच जैन। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से समराइज कर दिया एंड यू गिव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि क्या होता है। आई एम पर्सनली हेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि कोई टेक होम असाइनमेंट्स भी होती हैं, बिकॉज ऑनेस्टली हमारे ज़माने में जब हम ग्रेजुएट हुए थे तो इतना आसान नहीं होता था टू टॉक टू पीपल जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, जिन्होंने नेशनली भी काम किया हुआ है। एंड देन ऑल्सो लिंक्डइन भी इतना पॉपुलर टूल नहीं होती थी। नाउ दैट टेक हैज इवॉल्व्ड अ लॉट, everyone's available, accessible to you as well. Just आपको reach out करना था तो you were there at LinkedIn. आप we wanted to do some homework तो all the information was there. तो यही है कि जब टेक इतना evolve हो गया और उसने इतनी opportunities create कर दी हैं तो हमें AI के आने के बाद से उनको utilize करना चाहिए और सीखना चाहिए। देन अगैन आपने स्किल्स के बारे में बात की कि आप स्किलिंग बहुत जरूरी है और persistent होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू तो आई थिंक थोड़ा बात का स्टेज है, बट वी जस्ट वांटेड टू गिव इट लाइक थोड़ा ऑडियंस के लिए एक्साइटिंग बनाना था कि ये करने के बाद जैसे आपने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी बात की है, एंड Yeah. आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल व्हेन यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान। इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड। और अगर आपकी इस तरह बहुत टेक रिलेटेड जॉब या आप एज अ डेटा इंजीनियर अगर काम कर रहे हैं, जस्ट आई थिंक थोड़ा और इसको एक्साइटिंग बनाने के लिए, क्योंकि मनी इज अ ग्रेट फैक्टर ऑनेस्टली पाकिस्तान में जिस तरह इकॉनमी है, तो इट्स ग्रेट मोटिवेशन फॉर एनीवन। अगर कोई ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, कोई बाहर जाके जॉब करना चाहता है, तो दे शुड एब्सोल्युटली डू इट, लेकिन ऑब्वियसली फिर उनको एक पाथ भी फॉलो करना पड़ता है।
बहुत सारी Yeah. चीजें हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं। अगर आप गोल में हैं अभी राइट नाउ, तो ऑब्वियसली आपकी एक बहुत पीछे प्रॉपर जर्नी है। तो उसके ऊपर, बिफोर वी टॉक अबाउट स्किल्स, आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन एज वेल, कि आप थोड़ा कंपेयर करें कि जब आप इधर पाकिस्तान में जॉब करते थे तो आपकी हाउ वाज योर लाइफ लाइक, और इधर नेशनल इंटरनेशनली अब आप जब बोल में हैं और नेदरलैंड में हैं, तो क्या आपको डिफरेंस फील होता है? आई एम श्योर ज्यादा होता होगा, बट देन अगेन आई वुड रियली लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू कि उधर आपको क्या डिफरेंस फील होता था और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी कैसे आसान हो गई? या उसमें आई थिंक देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। एक है लाइफ इन यूरोप और नेदरलैंड्स इन जनरल, एंड सेकंड इज प्रोफेशनल लाइफ इन bold.com. If I talk about कि यहाँ पे प्रोफेशनल इकोसिस्टम कैसा है, so I'd say कि यहाँ पे it's very emphasized, it's hugely emphasized, huge emphasis is on work life balance. आई फील के यहाँ पे कोई आपको, फॉर एग्जांपल अगर 9 से 5 जो है इज यूजुअल टाइम जिस पे जो है आर योर ऑफिस आवर्स, तो नो वन वुड एक्सपेक्ट कि आप 5 के बाद अवेलेबल होंगे, और 9 से पहले अवेलेबल होंगे, और वीकेंड्स पे होंगे फॉर दैट मैटर। इट्स कम्प्लीटली फाइन बाय देम अगर आप घर आके इफ यू जस्ट टर्न ऑफ योर फोन, टर्न ऑफ योर लैपटॉप एंड जस्ट गो अबाउट योर बिजनेस, नो वन वुड ऑनेस्टली केयर, और कोई आपको रीच आउट भी नहीं करेगा इवन इफ शिट हिट्स द लाइक फैन। पाकिस्तान में तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप वेकेशन में अपना लैपटॉप घर पे छोड़ के जाएं, एंड यू टोल्ड मी कि आपका लैपटॉप आपके पास नहीं है बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, तो दैट्स प्रीटी फैसिनेटिंग आई गेस। जी, या सो लैपटॉप एक्चुअली मेरे पास था, बट उसमें एक्चुअली देयर वेरी स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस। अगर मैं वर्क लैपटॉप पे इफ आई एम एक्सेसिंग वीपीएन और एक्सेसिंग एनी इंटरनल पोर्टल ऑन माय वेकेशंस, तो वो बेसिकली लैपटॉप की एक्सेस बंद कर देते हैं। सो अगर आपके पास लैपटॉप है भी तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, सो मैं ऑब्वियसली बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, मुझे तो आदत नहीं थी कि 5 के बाद काम नहीं करना होता। सो मैं तो पाकिस्तान में भी आई यूज्ड टू, आई हैड नो प्रॉब्लम स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम इफ आई एम एंजॉयिंग समथिंग। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इनिशियली जब व्हेन आई जॉइंड, तो देयर वाज एन इशू इन प्रोडक्शन, और जो आया था अराउंड 7 PM और समथिंग। तो मैंने वो बीइंग इन दैट पाकिस्तानी जोन उसको खोल के देख लिया, लॉग्स देख लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, प्रॉब्लम क्या है, और उसमें आई डिड सम चेंजेस, फिक्स्ड इट, और मैंने जो है स्लैक पे पोस्ट कर दिया कि ये इशू हो रहा था और इसको वी हैव रिजॉल्व्ड इट, और ऐसे ऐसे हुआ। नेक्स्ट डे माय मैनेजर कॉल्स मी एंड ही सेज आई वांट टू हैव अ वन ऑन वन विद यू। वन ऑन वन में ही एक्सप्लिसिटली टोल्ड मी कि 5 के बाद आप लैपटॉप को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर आप एप्लीकेशन, कंपनी बंद हो जाती है, इट्स नॉट योर कंसर्न। 5 के बाद काम करने के लिए देर सेपरेट डेडिकेटेड टीम्स जो सारे सिस्टम्स देखती हैं आफ्टर 5, एंड उसमें भी बेसिकली जो कर भी रहा होता है उसको दे आर पेड वेरी वेल। सो पाकिस्तान में तो आई मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट इवन पे ओवर टाइम, लेकिन यहाँ पे इट्स अ वेरी हेल्दी अमाउंट जो ओवर टाइम की पे करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर लॉज एंड रेगुलेशंस दैट आर एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस जो हर कंपनी को दे हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंगली। Yeah, that is one work life balance. Secondly, I feel कि यहाँ पे I think it's the opposite in US. पाकिस्तान का जो वर्क कल्चर है वो यूएस से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। सो अगर आप यूएस में काम करने जा रहे हैं तो देन वट एवर आई से ऑल ऑफ दिस डजंट अप्लाई। यूएस का वर्क कल्चर इज़ वेरी सिमिलर टू हाउ इट्स इन पाकिस्तान। They are workaholic people. They like to, they're more focused around being rich. अगर आपने फॉर एग्जांपल मिलियनियर या बिलियनियर बनना है, आप यूरोप में नहीं बन सकते। फॉर दैट यू नीड टू मूव टू द स्टेट्स। बट इफ यू वांट टू हैव अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, इफ यू वांट टू have good work benefits, for example pensions and stuff, then basically it's nice to move to Europe. uh, Coming to that, yeah. So in life in general in Netherlands, I feel obviously Pakistan mein, so you have friends and family. Obviously, that is the only major thing that you miss when you are abroad. But I think in general, it's quite opposite to what's it's there in Pakistan. यहाँ पे people don't like staying up a lot. 6 बजे जो है बाजार बंद हो जाते हैं, markets बंद हो जाती हैं, and then obviously you have super harsh weather to deal with. So Netherlands especially is very windy. So and यहाँ पे people mostly use bicycles for commuting. So
Imagine bicycling in like 5-6 degrees and windy इतना होता है कि then at times आपको bicycle रोक के जो है खड़ा होना पड़ता है because you can't really drive in that direction. So life in Netherlands, I say, is a work in progress, but professional life here in bold.com, I think it's really nice. One more thing that I forgot is that uh, people or the tech community here, especially if, when you're making technical decisions, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा फोकस होता है on doing the right thing, making sure that the solution is right rather than के just बस जल्दी जल्दी ये चीज़ लाइव करनी है या चीज़ डेवलप करनी है and just do it. यहाँ पे कोई भी हमने चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना हो, वी हैव ह्यूज लॉन्ग मीटिंग्स जिसमें हम सिर्फ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं, रिस्क फैक्टर्स लिखते हैं. देन बेसिकली वी वर्क ऑन सम पीओसीज के इस टेक्नोलॉजी से इसको करें तो पीओसी व्हाट वुड इट लुक लाइक, एंड देन वी चेंज टेक्नोलॉजीज एंड देन उसके बाद वी इवेंचुअली डिसाइड कि हमने एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करना है. So यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस होता है on taking your time and then implementing something rather than just straight up diving into it. Thank you so much for drawing such a candid comparison between life at Pakistan और जिधर अभी आप हैं, जो traumatized हैं from Pakistan का work culture, I'm sure उनको तो वो सब कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि वो थोड़ी slow life Netherlands में जाके गुजारें, या जिस तरह हमने बताया है कि work culture उधर कैसा है और इधर कैसा है, और it's pretty interesting and also थोड़ी अनवर्ल्डली बात भी लगती है कि पाकिस्तान में तो आप 9 बजे तक भी काम कर रहे होते हैं, टाइम्स 12 o'clock as well, especially if you're डेटा इंजीनियर, आप बहुत एक टेक रिलेटेड फील्ड में हैं, या जनरली भी आपकी कोई इस तरह स्ट्रिक्ट वर्क आवर्स नहीं होते. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक वेरी ग्रेट मोटिवेटिंग, अनदर मोटिवेटिंग फैक्टर कि अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं तो दैट्स द वे टू गो, और दे कैन परहैप्स फॉलो योर पाथ एंड बी वेयर यू आर राइट नाउ. ऑल्सो जैन, अब नाउ दैट हमने इतनी सारी बात कर लिया अबाउट इट, इतना एक्साइटिंग बना दिया है फॉर एवरीवन, तो थोड़ी स्किल्स के बारे में भी बताएं. बेसिक आई थिंक ऑब्वियसली वी कैन गो टू गूगल, और हम ये गूगल कर भी सकते हैं. अब एआई के आने के बाद से चैट जीपीटी, बिंग, बार्ट, इतनी ऑप्शंस हैं, 12, अगर 13 महीने में कोई 100 या 1000 जॉब्स भी अप्लाई करने हैं तो अब चैट जीपीटी मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू. ऑल यू हैव टू डू इट, यूज इट एज एन असिस्टेंट. तो आप उसमें बताएं कि कोई, इफ यू वर टू गिव लाइक रफ एग्जांपल, या आप कोई 4-5 बेसिक स्किल्स के बारे में बात करें, ऑब्वियसली वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स, तो वो क्या स्किल्स हैं और वो क्या स्किल्स सीखनी है, बिकॉज ऑब्वियसली हम इंटरव्यू और नेदरलैंड्स तक तो तब जाएंगे ना जब हमारे स्किल होगी. अपस्किलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. Yeah, उसमें I think मैं उसको generally I split it into a couple of streams. The first stream is basically कि जब आपके पास so firstly I think you need to be aware of what data engineering is, data warehousing is. So अगर आप fresh graduate हैं और आप immediately start करें, I think then what I would suggest is कि you read up on what data engineering is, कैसे काम करती है, where does it fit in every organization, and then basically go about and decide if you want to pursue it. It would be really nice if you can find some mentors or seniors that you can discuss it with. uh, I would have honestly benefited a lot अगर मेरे टाइम पे कोई data engineering का mentor होता मेरा when I was graduating. So would have made it much easier for me to decide कि मैंने कौन सा career path choose करना है. Obviously, I did find great mentors after that in the data engineering space, but उस time पे I feel कि data engineering के mentors I did not have great mentors in that duration, or in general if अगर आप graduate कर रहे हैं कि आपने कौन सी exact field में काम करना है in the after graduating as for example a software engineering or a computer engineering graduate. Once you are through that, अगर आप start कर रहे हैं fresh in the data engineering space or the data analysis space, I think first thing that I think आप हर जगह सुनेंगे और I mean पिछले webinars पे भी शायद it might have been brought up is scripting language or a querying language. उसमें आप number one is SQL. SQL पे you need to be super good at it. Before you move to anything else, you need to be good at SQL. उसमें आप कोई भी framework use कर सकते हैं. Doesn't really matter. Postgres करना है आपने, MySQL करना है. There are whole loads of others as well. But उसमें you need to be comfortable at it because जब भी आप जॉब्स के लिए जाएंगे या स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा इंजीनियरिंग या डेटा एनालिसिस में स्टार्ट कर रहे हैं
तो सबसे पहली चीज़ आपसे इंटरव्यू में जो पूछेंगे वो सीक्वल की क्यूरीज पूछेंगे, ये वो सिनेरियोज देंगे कि एक्स वाई जी हमने एक्सट्रैक्ट करना है, हाउ डू वी डू इट यूजिंग जॉइन स्टफ लाइक दैट। और उसमें आई वुड से कि उसमें सिर्फ उसको डोंट रीड अप थियोरेटिकली, ट्राई टू प्रैक्टिस इट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एडवांस सीक्वल। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि दो टेबल सिंपल से दिए, मैं इनमें से डेटा ज्वाइन करके देना है, वो दैट इज वेरी बेसिक लेवल, वो हार्डली कोई इंटरव्यू में पूछता है। सो you need to be good at advanced level SQL. For example, joining 4 tables, joining 3 tables, uh, CTs क्या होते हैं, different concepts like views, materialized views. You can read up on those. All of those are linked to basically SQL data warehouse architecture and stuff. The second is ये जो SQL का skill set है, that is common between data analysts, data engineers, data scientists. If you just stick to SQL, और अगर आप उसमें basically you master yourself, आप dashboard पे काम करें, तो then basically you go down the data analyst career path. Data engineering is somewhat close to software engineering, so उसके लिए obviously you need to be good at some programming frameworks, आपका experience होना चाहिए उसमें। उसमें usually people start with Python. So I personally suggest कि उसमें जो भी आपको comfortable लगता है, you start with that. Python पे start करना है तो you start off with basic Python अगर आपने पहले काम नहीं किया हुआ। अगर आपने काम किया हुआ है, then I would suggest move to more data related libraries of Python, for example data frames पे काम करें। उसको अगर आपने प्रैक्टिस करना है, सो व्हाट आई सजेस्ट टू एवरीवन आस्किंग मी इससे पहले भी कि जब भी कोई लैंग्वेज सीख रहा होता है तो आई डोंट रियली सजेस्ट कि आप उसको फॉलो अ ट्यूटोरियल जिसमें एक एग्जांपल दी होती है, उसको नीचे लिखा होता है ट्राई इट आउट एंड यू जस्ट ट्राई इट आउट एंड यू लाइक यस ये सीख लिया हमने और ये दैट इज डन। आई हाईली सजेस्ट कि जब भी कोई लैंग्वेज या फ्रेमवर्क आप सीख रहे हैं उसमें यू ट्राई एंड वर्क ऑन सोलो प्रोजेक्ट्स। सो कोई भी आप डेटा सेट पकड़े हैं, ऑनलाइन काफ़ी डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, उनको बेसिकली ट्राई टू मैनिपुलेट दोज इन पाइथन, उनको क्लीन करें एंड सी के डिफरेंट ऑपरेशंस वट एवर यू लर्न इन द लेसन्स और ट्यूटोरियल्स अगर आप स्क्रैच से कर रहे हैं, डी डुप्लीकेशन करें, नॉर्मलाइजेशन करें एंड सी हाउ इट वर्क्स। बिकॉज उससे आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली प्रोडक्शन में या जब आप हाई वॉल्यूम डेटा एनवायरनमेंट्स में काम करें तो कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिकॉज अगर आपके पास टेबल एग्जाम्पल टेबल दिया हुआ है जिसमें सिर्फ 10 रोज हैं, उसमें आपको वो समझ नहीं आएगी कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। सो आई वुड से कि अपस्किल इन SQL एंड पाइथन और जावा और वट एवर सूट्स यू। Usually data engineering space में it's Python and Java. So some frameworks, for example, काफ़ी open source frameworks are using Java. Even जो Python भी use कर रहे हैं, those are built as mappers on top of Java. So अगर आप Java कर रहे हैं तो that's a huge plus. अगर आप Python कर रहे हैं तो then it's also a great idea to dive into that. So either Java or Python. Third is third basically जो है that would be the differentiating factor. वो आता है बेसिकली कि आपने ओपन सोर्स कितने फ्रेमवर्क्स का आपको आइडिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क्स का। उसमें फॉर एग्जांपल काफका आ जाता है, फ्लिंक आ जाता है, स्पार्क आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा एनालिटिक एरिया में जाएं तो डीबीटी इज क्वाइट पॉपुलर दीज डेज। ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जो बेसिकली आर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अगर आपने डेटा इंजीनियरिंग में जॉब करनी है। बिकॉज लॉट्स ऑफ डेटा इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने इनमें से किसी पे भी या इनमें से सिर्फ एक पे या दो पे काम किया होता है। तो अगर आपको इनका इवन ऑफ वन और टू ऑफ दोस अगर आपको उनका आइडिया है, या अगर आपने कोई एंड टू एंड पाइपलाइन बनाई है जिसमें आपने एसक्यूएल भी यूज़ किया है, काफका भी यूज़ किया है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क लाइक फ्लिंक और स्पार्क भी यूज़ किया है, तो एंड टू एंड आपने पाइपलाइन बनाई होगी, तो देन यू वुड हैव एन आइडिया कि कौन सी टेक्नोलॉजी पाइपलाइंस में कहाँ फिट हो रही है। एंड that is what I say would the differentiating factor would be अगर आप data engineering उसमें जा रहे हैं। And on top of that अगर आप if you have knowledge and experience around cloud frameworks as well, तो then that would be a huge benefit honestly। उसमें से कोई भी हो सकता है, आप किसी भी public cloud पे काम कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल इफ यू वेयर यू वर्किंग वहाँ आपको चांस नहीं मिल रहा क्लाउड पे काम करने का, देन आई वुड सजेस्ट कि इट्स रियली इजी टू मेक अप योर पर्सनल अकाउंट और उस पर आपको बेसिकली फ्री क्रेडिट्स भी मिलते हैं। सो इट्स नॉट दैट हार्ड ऑनेस्टली, उसमें यू जस्ट नीड टू पुट द एफर्ट एंड टाइम इन इट। और वंस यू हैव 3 or 4 डिसेंट एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स इन योर पोर्टफोलियो जिसमें फॉर एग्जांपल आप डेटा रॉ फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करने से लेके उसको प्रोसेस करने तक
डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वो अगर आपकी गिटहब पे या गिटलैब प्रोफाइल पे होंगे, तो देन आई थिंक यू हैव अ रियली गुड चांस टू एस द इंटरव्यूज, एंड देन आपको ऑब्वियसली आइडिया भी होगा कि प्रॉब्लम्स किस नेचर की आती हैं इंटरव्यूज में. थैंक यू सो मच जैन। और आई थिंक हम जब बार बार ये बात करें कि अगर हमारे ज़माने में मेंटोर होते या हम इतना इजीली एक्सेस कर सकते तो हम शायद परहैप्स हम हमारी करियर ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी डिफरेंट होती। ऑब्वियसली यूर अ डेटा इंजीनियर, आप बोर्ड में काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो प्रिटी ग्रेट एज वेल। हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं, इंटरव्यू स्किल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ इट, और आप लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है, स्किल अपस्किल करना अपने आप को कितना इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हमारा ज़माना, I think I graduated in 2020. तो it's like अब इतना क्योंकि टेक evolve हो गया, आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कितने पुराने हो गए, because it's growing at such a rapid pace। और आपको लगता है कि हम डरते भी थे कि जॉब्स रिडंडेंट हो जाएंगी, हम क्या करेंगे, लेकिन एआई के आने के बाद आई थिंक काफी आसानी हो गई है। आप गूगल लोगों को करने में मसला होता था, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, बार्ड से पूछ सकते हैं। Stuff like that. Thank you for talking about mentorship as well, Zain. I think that's very important. हम बहुत हेजिटेट होते हैं टू रीच आउट, बट देन अगर नहीं होते तो डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, अगर डेटा इंजीनियर है तो आप कितने पैसे कमाते हैं। आई डोंट थिंक एनी दिस इज द राइट क्वेश्चन, कोई आपको नहीं बताएगा, आपको पूछना भी नहीं चाहिए। बट व्हाट वुड बी द राइट क्वेश्चन इज कि एक एवरेज डेटा इंजीनियर की अगर हम देखें जिधर आप जॉब करते हैं या नेदरलैंड्स में, क्या एवरेज सैलरी है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आप एक कैब बता सकते हैं, बट ऑब्वियसली आप नहीं बताएंगे कि मेरी सैलरी कितनी है। मैं भी नहीं बताऊंगी, कोई मुझसे पूछेगा तो। आई थिंक थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, अगर कोई आपको रीच आउट करता है, कौन से क्वेश्चन होते हैं जो आप सुन के कहते हैं कि यार इसका मैं क्या जवाब दूं, या आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो अगर किसी कोई मेंटोर को रीच आउट कर रहे हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि रीच आउट करते हुए कितने माइंडफुल हो अबाउट देयर टाइम, अबाउट व्हाट क्वेश्चंस यू आर आस्किंग देम। तो उसके ऊपर अगर थोड़ी सी बात करें। Yeah, I think that's actually a very good question, especially when you're reaching out to someone, or if they're getting loads of questions. So I think अगर आप ऐसे सवाल पूछेंगे कि and you're not doing your homework, so कोई भी interested नहीं होगा आपको on getting back to you, या अगर करेगा भी तो they wouldn't follow up, या अगर बाद में आपको सवाल पूछेंगे तो they wouldn't really follow up with that. So I think it's super important कि आप you make sure कि आपने अपना homework किया है, you have invested the time, you know exactly what you want to ask, और उसमें basically then you need to basically rephrase it in a nice manner. For example, अगर मैंने किसी टेक्नोलॉजी पे काम शुरू किया है, तो इफ़ आई आस्क समवन के ये टेक्नोलॉजी मैंने सीखनी है तो मैं कैसे सीखूं, तो कोई भी बंदा जो वो सवाल पढ़ा होगा, ही वुड बी लाइक वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, क्योंकि ऑनलाइन आपके पास यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, यू हैव different multiple resources online. So I think we need to be wary of the fact that everyone has a fixed time slot that they can help out other folks in. तो उसमें make sure that you do your homework, आप अपना time invest करें, you research, because अगर आपने कुछ if you need to upskill on anything, या अगर आपने if you need to learn something, everything is available online. आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बैठ के सिखाएगा. But mentorship, where it comes in, is when you're deciding on career paths, या very tough choices. For example, मैं इस तरह का सवाल पूछ सकता हूँ किसी से कि मैंने ये दो टेक्नोलॉजीज हैं, दे डू वेरी सिमिलर स्टफ, और इन दोनों पे काम करना है, और इस तरह की मेरी प्रॉब्लम है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, शुड आई लुक इनटू मोर? फॉर एग्जांपल, क्लिंक या स्पार्क में से किसको चूज करूँ, या एयर फ्लो या आर्को में से किसको चूज करूँ, सो स्टफ लाइक दैट, या इन जनरल करियर progression के this is what I worked in previously, or this is what I see myself in 5 years, 6 years. So what would you suggest कि मैं, how do I go about it? If there are any online resources that you can recommend me. So that is generally how anyone would want to help you as well. Okay, this person has spent decent amount of time and invested decent amount of time, and then he's looking up to me, and that is where I would be happy to help him as well, or anyone in और general. आपसे कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि वो आपकी सैलरी कितनी है, या जब आप पाकिस्तान विजिट करते हैं तो आपसे लोग ये, आई थिंक 1000 बार तो आपने ये क्वेश्चन अब तक सुन लिया होगा। Yeah, so salary में depends the people that I'm close with, वो पूछते नहीं है, वो assume कर लेते हैं, वो बस बता देते हैं कि यार पाकिस्तान में जब था तो बस करते थे 10 लाख तो कमा रहा होगा आराम से. But I think हम्म। salary ranges are not really that hidden anymore. आप Glassdoor पे जाएं किसी भी कंपनी का, you can get these salary ranges in general. नेदरलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो नेदरलैंड में सैलरी रेंजेस आर नॉट एज हाई एज फॉर एग्जांपल यूएस,
बट यूरोप में जो है नेदरलैंड्स की सैलरी रेंजेस काफ़ी अच्छी हैं, वो इस वजह से क्योंकि नेदरलैंड्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अगर आपने यहाँ इफ़ यू नीड टू सर्वाइव वेयर यू इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू एक्चुअली सेव बिकॉज इन यहाँ पे इट्स सुपर इन्फ्लेटेड एवरीथिंग. एंड टैक्स ऑब्वियसली यूरोप में आई थिंक इट्स नॉट हिडन कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज में द टैक्स ब्रैकेट्स आर सुपर है. सो आपकी सैलरी का एटलीस्ट 40 to 50% तो सिर्फ टैक्स कट रहा होता है और बाकी जो है यू गेट द रेस्ट ऑफ इट. तो जनरली सैलरी नो रेंज. बट पीपल who are living in पाकिस्तान और वो जब ऑब्वियसली आपको देखते हैं कि आप बात बता रहे थे कि आप 5 बजे के बाद काम भी नहीं करते हैं एंड देन यू आल्सो साइकिल एंड 6 बजे सब बंद हो जाते हैं. तो पाकिस्तान में कंसिडरिंग आवर इकोनॉमी हमें तो यही लगेगा कि ओ इट्स अ वेरी फैंसी लाइफस्टाइल और अब नेदरलैंड इज द वे टू गो. थैंक यू सो मच जेन फॉर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन सच ग्रेट डिटेल. आई थिंक सबको बहुत एक क्लियर पिक्चर मिल गई है. आई एम वेरी फैसिनेटेड by the entire work culture that you explained और सारी skills के बारे में जो आपने बात की है. Just on concluding note, could you please also talk a little about importance of soft skills? आपको लगता है कि communication, team player, respectful towards your team member, and stuff like that, how important is that? Yeah, I feel it's very important to be honest. Communication skills आपके so what the expectation generally is कि communication skills don't need to be fancy English with uh, an American accent. What needs to be important is कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं whatever you're working on you're able to communicate that properly in a clear manner. और उसमें the important thing that comes into mind my mind is at least कि पाकिस्तानी यूजली या पाकिस्तानी कल्चर में मैंने अक्सर देखा है कि अगर आप किसी से टाइमलाइंस डिस्कस कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ समथिंग दैट यू वर्किंग ऑन, हम अक्सर ये करते हैं कि उसको बेसिकली थोड़ा सा एग्रीवेट करके बता देते हैं. फॉर एग्जांपल टाइमलाइंस को जो है वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक करके बता देते हैं और बाद में कहते हैं वील थिंक अबाउट इट, बात की बाद में देखी जाएगी एंड स्टफ लाइक दैट. आई थिंक यहाँ पे इट्स यूजली वैल्यूड कि आप यू बी एज क्लियर एज पॉसिबल. अगर कोई चीज़ नहीं हो सकती आपसे तो you need to communicate that properly. In general interviews में भी I feel कि you need to be absolutely honest. आपकी English doesn't really matter if it's not really fancy with an accent or something. अगर आप communicate कर सक रहे हैं properly, बात कर सक रहे हैं, you need to develop that connection with your interviewer, especially जब आप culture fit interviews में होते हैं, and that's where the communication skills are the most important I feel. Other than that, I think teamwork and collaboration. अगर आप if you need to be open to opinions. अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं भी है, then even then you need to listen to what other people are thinking and you need to understand the fact कि अगला बंदा भी जो है he is bringing his own set of expertise and experience to the table and हो सकता है जो मैं what I have in mind might be different to what he has in mind. So I think these are the two most important things that I can think of is be as clear as possible, and the second would be be open to listening, be open to other people's feedback. Don't take it on your ego. अगर कोई for example कोई flaw भी point कर देता है कि this is where you're lacking, learn from it. I think take it positively. That would be appreciated in any work culture if you're taking feedback positively. Thank you so much, Zain, for being so candid about so many things and so honest about it. आपने time commitment की बात की है. We're also going to be very mindful of that. आपसे हमने 1 घंटा request किया था, तो we're going to stick to that. Thank you so much. There's so much that's still there to, cover. हम उसके we can go on and on about it. I think मैं थोड़े hands भी raise देख रही थी, but unfortunately क्योंकि time बहुत कम होता है, तो we cannot take a lot of questions. मगर हम briefly एक ऐसा question Q&A notes बना लेते हैं कि हम सारी चीजों को cover करें. But in case there's still something that's unanswered, please reach out to us at Atom Camp. आप जैन से भी प्लीज थोड़े अगर उनकी माइंडफुल होके, क्योंकि वो बहुत बिजी भी होते हैं काम, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो परहैप्स यू कैन आल्सो रीच आउट टू हिम. एटम कैम्प पे जिस तरह मैंने जब वन वी स्टार्टेड तो मैंने बात की थी कि हम डेटा साइंस, एआई, डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत काम करते हैं. Currently we're offering a data engineering AI boot camp in collaboration with NUST as well, जहाँ के जैन भी ग्रेजुएट हैं. तो अगर आप फिर इंटरेस्टेड, आप उधर वो चेकआउट कर सकते हैं. एनी अदर क्वेरी और लर्निंग, ट्राइंग टू लर्न सॉफ्ट स्किल्स, कोई भी आपको टेक्निकल स्किल्स, कोई हेल्प चाहिए करियर काउंसलिंग में, प्लीज रीच आउट टू अस, राइट अस एन ईमेल. वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. And thank you so much, Zain, for being so generous about your time. I think that's one thing about Pakistanis that everyone really appreciate, that they're very generous with their time and imparting knowledge that they've learned back to the community.
So very happy and proud to have so many Pakistani representing us globally as well, and for being the mentor that we never had. So thank you so much, Zain, for your time. It was your working day as well. आप अपना Friday को काम भी कर रहे थे, but again आपने कहा कि आप 5 बजे cover wind up कर देता तो hopefully हमने आपको we wouldn't keep you from your work. But thank you so much, Zain. Have a really nice day, and thank you so much for talking to us and for giving us such interesting tips and tricks. Thank you. Thank you for And having and Team Atom Camp as well. I think you guys are doing a great job. Just keep at it. thank you so much, Zain. It was really nice talking to you. And thank you so much to our audience as well. पाकिस्तान में इस वक्त आई थिंक 11 बज रहे हैं और आपने हमारी 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन सुनी है. दिस विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल. तो अगर आप रेफर करना चाहते हैं समथिंग दैट शुड आई मिस्ड आउट ऑन, आप उधर जाके भी चेकआउट कर सकते हैं. आई थिंक on this note, we'll conclude. Please keep learning, be persistent at it, and be mindful of other people's time. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.